This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली अल्लाह मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अरीनल अशियाई कमाहिया। 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 अल्लाहुम्मा अरीनल अशियाई कमाहिया।
हिया अल्लाहुम्मा अरीनल अशियाई कमा 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 हिया। शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। या अली मदद अजीज सर। याली मदद, याली मदद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच तमाम साथियों को, या अली मदद, and thank you for joining us this morning. Such a great and beautiful morning to be here. हम आगाज करते हैं मौला के मुबारक नाम से। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम, या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, अलैयुल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा, अलैयुल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम, या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, अलैयुल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा। या मौला तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला, या मौला तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला। तमाम साथियों को एक बार फिर यारी मदद। जैसा कि आपको याद होगा कि हम एक कोर्स पर चल रहे थे, that have we recognized and understood Imam as we should have। क्या हमने इमाम की वो कदर की और उसको पहचाना जैसा कि उसको पहचानने का हक है। On this subject, we have covered some of the fundamental but very basic question, and this question were there as a self reflection। इस सब्जेक्ट के अंदर हमने कुछ असूल को कवर किया, लेकिन बिल्कुल सादा और बेसिक असूल, और वो सवालात सेल्फ जाती सवालात थे, यानी कि हर एक अपने आप को पूछे। Those questions were personal, individual, for self reflection। क्योंकि हर इंसान अपनी समझ से, अपनी इल्मी ताकत से, अपने ईमान के जरिए से इमाम को चाहता है, जानता है और पहचानता है। Everyone with their free will, with their beliefs, faith, and with their knowledge and understanding, take the Imam one way or the other। And those four questions were:
how do you, as individually, as an individual person, as an individual murid, as an individual follower of the Imam, how do you see it? How do you see the Imam? Remember, there is no wrong or right answer because it is an individual choice, individual understanding, individual faith. So we wanted to make sure that we all understand this is not a challenge to anyone or to anyone's faith. हमको याद रखना है और इस बात को समझना है कि ये जाती है, इसमें किसी के ईमान को चैलेंज नहीं करना है कि फला यूं बोलता है, फला यूं बोलता है, फला ये समझता है, फला ये समझता है। ऐसा नहीं है। हमें दूसरों की तरफ नहीं बल्कि अपनी तरफ देखना है। It is not reflection on others but reflection on self. How do we see him? Do we see him as human like you and me? Or do we see him as a guide, Hadi? Or do we see him as a Noor? Or do we see him as Ali Allah? And whatever your answer is, that is your personal faith and belief and understanding. No one can challenge that. And I wanted to start with that note. That this is not a reflection on others, but reflection on ourselves. मैं इस बात से इस सेशन का आगाज करना चाहूंगा कि ये जाती है, ना कि दूसरों के ऊपर कोई तोमत या क्रिटिसिज्म या रिफ्लेक्शन है। आए हम अपना नुक्ता नंबर 1, let's start with our reference and the point number 1. And I would like you to pay attention to a word. And I will highlight this here so everyone can see what word I want you to pay attention to. Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam in one of the Hadith Nabawi says that there would be one amongst you will fight the people over the ta'wil, interpretation, understanding of the Quran in the same way as I have fought over its tanzil. तुम में से एक ऐसा शख्स होगा कि जो कुरान के तावील के लिए जंग, the underlined word, जंग करेगा, जिस तरह से मुझे लड़ना पड़ा था कुरान की तंजील के लिए। क्वेश्चन, क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तंजील के लिए लड़ना पड़ा लोगों से? क्योंकि लोग नहीं मानते थे, कहते थे कि ये तो तुमने अपनी तरफ से बनाया है। Why did he have to fight for the revelation, the tanzil, the words, the ayat, the surah of the Quran? Because people will fight with him by saying, you have made this ayat, surahs, this is not from Allah,
but those are your own words. And then when Ali Murtaza, Asas of the Muhammad, the Imam of the time, when he would do the Tawil, the interpretation, when he would give the understanding of the ayat and the surahs in the Quran and the understanding of the Shariat, the laws of the Islam, they will fight with him by saying what? This is your understanding. Those are your words. This is not our understanding and that is not our words. वो मौला से भी लड़ते थे कि ये जो तुम हमको समझाते हो शरीयत के बारे में और जो तुम हमको समझाते हो कुरान के बारे में, वो तो तुम्हारे अल्फाज है, हमारी समझ में ये बातें नहीं आती है। पहले वो मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अंबिया से लड़ते थे कि ये कुरान तुमने बनाया है। फिर जब उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया तो फिर मौला अली से लड़ते थे और कहते थे कि ये जो तुम इसकी तावील करते हो, ये जो तुम हमको समझाते हो, ये जो बातें तुम करते हो हमारी समझ में नहीं आती है। Why are we reading this today? What does this have to do with our subject for the day? अब इसका हमसे क्या ताल्लुक है? ना तो हम मोहम्मद मुस्तफा से लड़ते हैं, ना ही अली मुर्तजा से लड़ते हैं। Why are we talking about this today? We are not fighting, we are not arguing with Muhammad Mustafa nor with Ali Murtaza, but what are we saying or trying to learn here? When Imam says and gives us a farman, when peers does the interpretation in their Ginan, when our Arifin explains the Asul-e-Deen, you know what we do? We argue with them that this is not the Farman, the word in the Farman is not the way you are saying, that is not my understanding, that is your understanding. And then even sometime, unfortunately, we say, why doesn't Imam give us this Farman? Why doesn't Imam give us this Farman? Why doesn't Imam say this? Why doesn't Imam say this? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करें। How many times have you or one of you have heard someone says, why doesn't Imam give us this Farman? Why doesn't Imam do this? Why does Imam does that? Don't be shy. We have done that. Maybe not today after this ilm and understanding, but we all have done that in the past. We want Imam to say and give the Farman which is convenient for us. In 1993 London, Maula Baba says, follow your tariqa with conviction, not with convenience. क्योंकि हम अपना कन्वीनियंस देखते हैं कि अगर ये फरमान मेरे कन्वीनियंस से है, मेरे लिए आसान है और मैं फॉलो कर सकता हूं,
Thank you, Mola Baba. I like this Farman. I will follow this Farman. But if it's not convenient for us, Mola Baba, why Ibadat is 4 o'clock in the morning? That is not convenient for me. That's my sleep time. It's not convenient for me. Can you change the time of the Farman for me? Of the Ibadat for me? Or we just completely ignore their Farman, which is not convenient for us. इमाम को लड़ना पड़ता है हमसे और हम इमाम से लड़ते हैं अपनी आसानी के लिए. डोंट बी शाय. यानी कि जो दुरुस्त बात है वो तो दुरुस्त बात है, उससे हमको सीखना है, डरना नहीं है. जब हम सच बोलते हैं तो उसमें डरने की बात नहीं है, उसमें सीखने की बात है. मुला फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे तंजील के लिए मुसलमानों से लड़ना पड़ा और अली को तावील के लिए मुसलमानों से लड़ना पड़ा. आज इमाम जब हमको फरामी देता है तो हम सवाल करते हैं, हम लड़ते हैं, हम बोलते हैं मौला ने ऐसा फरमान क्यों किया, ये मेरे लिए आसान नहीं है, मौला ने ऐसा बोला होता ना तो अच्छा रहता, मेरे लिए आसान होता, मैं एक अच्छा मोमिन बन जाता. और फिर जब आरिफीन उन फरामीन की अंडरस्टैंडिंग देते हैं तो लोग उनसे भी लड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं मौला ने तो ये लिखा है, देखो ये मेरे लिए आसान है, अब इसके मायने जो तुम समझा रहे हो ना वो मेरे लिए आसान नहीं है. यहाँ पर इससे हम आगाज करते हैं कि कभी कभार जो सच्चाई है वो आसान नहीं होती है. That's what we are starting with. The truth may not be easy for some, but truth is the way of learning. When we are not true through ourselves, we cannot learn. सच्चाई आसान नहीं है, लेकिन सच्चाई से हम सीख सकते हैं. और जब हम सच्चाई को देखते हैं तो हमारे पास एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है टू लर्न. Correct? This is what we are starting with our subject. Learn. How do you see him? What is the fact, the truth? Now remember, free will remains with you. No one can take that away from you. You see the truth the way you want to see the truth. And no one can take that away from you. Let's come to our point number 2. All of us 3 times a day says, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Everything is encompassed in the living, manifested Imam. कोई शक नहीं है, कोई मसला नहीं है. रोजाना 3 मरतबा दुआ में हम पढ़ते हैं, हर चीज इमाम में समोई हुई है. अगर ये बात हम ईमान के साथ पढ़ते हैं और यकीन करते हैं, if we say this ayat in our dua 3 times a day with the utmost belief and faith, ईमान के साथ, then the question will rise, if we believe Imam is a human, then in human
everything cannot be encompassed. इंसान के अंदर हर चीज मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने उसको अगर उसको इंसान माना तो वो तो गलतियां भी करेगा। इंसान के अंदर अक्ल कुल नहीं हो सकती है, उसके अंदर तो अक्ल गरीजी होती है। वो नफ्स कुल नहीं हो सकता है, वो रूह सिफली होता है। He is not the perfect intellect as human because he is the lower I, the lower intellect. एक तरफ से हम इमाम को इंसान कहते हैं और मानते हैं कि वो हमारे जैसा इंसान है, और दूसरी तरफ से कहते हैं कि वो वकुल शहीन है। Which one is it? Do we believe in what we say in our dua? Or do we just say it, وَكُلَّ شَيْءٍ, and do not believe it? Because Imam as a human, then this ayat does not fit our belief. This ayat does not fit our belief. Because a human cannot be kul. As the human is the lower I. Akle garizi or ruhe sifli. My brother and sister, hakiki momino, देखें हम बोलते क्या है और मानते क्या है। अगर हम कहते हैं कि इमाम इंसान है तो हम बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। Remember, there is no challenge. If we say Imam is human, then this ayat that we read in our dua 3 times a day, we say it, but we do not believe it. Because if you believe it, then Imam is Wakul Shahin Asana Fi, Imam Mubin, everything is encompassed in the manifested living Imam. Then as a human, it cannot be. One or the other, you cannot have both. Self-reflection. And you see, I did not make this up. Then look at the reference on the bottom of this, 932. Why? So you may reflect. What is the ayat? Then there will be people who will argue falsely with you, and they will try to blow away the nur in the Imam by saying he is nothing but a human like you and me, and that's a false argument. And they are trying to blow away Imam's nur in the Imam. And reference is right in front of you, so you cannot say that I had made it up. Let's come to the next reference. Why does Imam, or why does anyone will say Imam is nothing but a human? You know what I'm gonna do? I'm gonna talk from your side of the understanding. अब मैं आपकी तरफ से कुछ बोलना चाहता हूं। किनकी तरफ से? कि जो लोग कहते हैं कि इमाम हमारे जैसा इंसान तो है, और वो दुरुस्त कहते हैं on the level of Shariat. If you are on the Shariat, then you are absolutely correct. Imam is nothing but a human. Because where you stand in Ismaili Tariqa, you are standing on the level of Shariat, and at the level of Shariat, you are absolutely correct. Imam is nothing but a human. देखा आपने?
आप कहां पर खड़े हुए हैं मजहब के अंदर? अगर आप शरीयत पर खड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि शरीयत में इमाम कुछ भी नहीं होता मगर इंसान होता है, क्योंकि शरीयत में उसको और कुछ कहना जायज भी नहीं है, हक भी नहीं है, और अलाउ भी नहीं है, इजाजत भी नहीं है। जायज भी नहीं है, हक भी नहीं है, और इजाजत भी नहीं है। Do you see? I want you to know that you are correct in your thinking. If you are at the level of Shariat in our tariqah, then you are correct in your thinking that Imam is nothing but a human. Now, I cannot just take your favor and talk in your understanding. I must also help and talk on the side of tariqat. So those of you who are standing in our tariqah at the level of tariqat, they will say and believe Imam is nothing but a guide, a hadi to us. And they are absolutely right in their understanding. Because at the level of tariqat, that is the teaching and that is what the lesson is. Then you are right. Because where you stand at the level of tariqat, to you, Imam is nothing but an intercessor, a guide, a hadi to you. अगर आप तरीकत पर खड़े हुए हैं हमारे मजहब के अंदर, तो वहां तो आप बिल्कुल दुरुस्त है जब आप कहते हैं कि इमाम एक रास्ता है, एक हमारा दरमियान में ब्रिज है, और वो हमारा हादी है, वो हमें समझाता है। आप तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी जगह पर, क्योंकि तरीकत पर यही सिखाया जाता है, यही तरीकत की तालीम है, और आप अपनी जगह पर बिल्कुल हक है, दुरुस्त है, ये कहते हुए कि इमाम कुछ भी नहीं है मगर एक हादी, only an intercessor. I know you love this word. Imam is nothing but an intercessor. क्योंकि आप जिस मकाम पर खड़े हुए हैं, जो तालीम आप सुन रहे हैं और ले रहे हैं, वो तरीकत की तालीम है, और आप अपने मकाम पर बिल्कुल दुरुस्त है, और आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई मसला नहीं है। No one can challenge you, because if you are at the level of tariqat, then you are absolutely right in your understanding that Imam is nothing but a hadi, a guide to you. लेकिन इमाम फरमाते हैं कि हमारा तरीका हकीकत का तरीका है, हमारा तरीका हकीकत पर मबनी है। But Imam's फरमान may not be convenient for you, but Imam फरमान is that our tariqa is the tariqa of hakikat, and our tariqa sits on the fact, the truth, the hakikat. अगर आप हकीकत के मकाम पर हमारे तरीके में खड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे कि इमाम नूर इलाही है, इमाम नूर मौलाना शाह करीम है, वो नूर है, इंसान नहीं, इंसान के जिस्म में नूर है, हादी नहीं, हिदायत नूर के जरिए से। Let me explain this in English. If you are at the level of hakikat as per Imam's Farman, not because I'm saying it, do not mind me.
It doesn't matter what I say. As per Imam's Farman, if you are at the level of Hakikat, then you will say Imam is Noor-e Ilahi, Imam is Noor Maulana Shah Karim, Imam is in the human body but is the Noor. Imam guides through the Noor-e Ilahi, and Imam is the Noor. Where do you stand on these stages? अब सवाल पैदा हो गया कि इन मकामात पर आप कहां खड़े हुए हैं? अभी एक स्टेज बाकी है. We still have one more stage to go. But before I go to that stage, I must ask, where do you stand? Remember, there is no wrong or right. And I have just spoken on your behalf that if you are at the level of Shariat, you are absolutely right. If you are at the level of Tariqat, you are absolutely right. And if you are at the level of Hakikat, then again, you are absolutely right. अब सवाल ये हो गया कि हम कहां खड़े हुए हैं, और अभी हमारे पास एक और रैंक स्टेज बाकी है. लेकिन अगर आप मारिफत के मकाम पर है, क्योंकि मौला ने उसी फरमान में जहां फरमाया कि ये हकीकी मजहब है और उसके बाद हमें मारिफत की तरफ जाना है, और अगर आप मारिफत की आंखों से देखते हैं तो फिर आप कहेंगे कि ये इमाम अली अल्लाह है. अगर आपके पास मारिफत का मकाम है, मारिफत की आंखें हैं, मारिफत की समझ है, now those who have the sage understanding, the eye, the belief, the faith of marifat, then they will say that he is Ali Allah, and then they also would be absolutely right in their saying, in their understanding, in their belief. Question remains, personal reflection must be done individually. सवाल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है कि हम इन 4 दर्जात में से, स्टेजेस में से कहां पर है? शरीयत पर है, ठीक है, कोई बात नहीं है. तरीकत पर है, ठीक है, कोई बात नहीं है. हकीकत पर है तो भी ठीक है, और मारिफत पर है तो भी ठीक है. Each stages in their own place is right for you. Don't let anyone tell you otherwise. जहां पर भी आप खड़े हुए हैं, आप अपनी जगह पर दुरुस्त है, और आपको कोई भी क्रिटिसाइज, गिला गिबत नहीं कर सकता है. आप अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है. याद रखना, ये आपको कहां खड़ा रहना है वो आप खुद ही सोचना है. Another reflection, अगर हर चीज इस तरह से सोचनी है 4 मकामात पर, तो फिर हमारी रूह भी तो 4 मकामात पर खड़ी हुई है. यानी कि हमारी रूह के 4 जौहर हैं. If everything is on stages, on the levels, then even our soul is on 4 stages. And you will see
Why are we talking about 4 stages of soul? What does that have to do with recognition of Imam? If your soul, the one of the attribution of your soul is the mineral soul, Ruhe Madiniyat, which is the static soul, then of course you will be static, frozen in your belief at the level of Shariat. If you are still at the level of mineral soul, where your soul is static, एक जगह पर खड़ी हुई है, मौला अपने फरमान में फरमाते हैं कि तुम में से कुछ लोग हैं जो इल्म के साथ दर्जा ब दर्जा ऊपर जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं हम कहीं नहीं जाते हैं, हम तो यहीं बैठे हुए हैं. In other words, you are saying my soul is at the first stage of the mineral soul, at the level which is static, and I'm not going anywhere. Then so be it. तो क्या मसला है हमको? अगर आप वहां खड़े रहना चाहते हैं तो आपके पास वो हक है, फ्री विल है कि आप उधर खड़े रहें और कभी भी ऊपर ना आए, और कोई मसला नहीं है उसमें, और कोई भी आपको नहीं बोल सकता है कि आप ऊपर जाएं. लेकिन आप कहते हैं नहीं, मुझे तो ग्रो होना है, मुझे तो ऊपर जाना है. But if you say no, I do not want it to be at the level of the dust, at the level of the mineral, and I want it to grow, then you must adopt the attribution of vegetative soul, because vegetative soul grows. रूए मादनियात नहीं जाती है ऊपर, लेकिन रूए नबाजाती ऊपर जाती है, ग्रो करती है. And when you grow, then you will have a better understanding, because you are alive now, you are no longer static as a mineral, because there is an improved soul in the vegetative soul which says I would like to grow in my tariqah, in my understanding, in my ilm. You see, we are not going to talk anything over here without reasoning, without rational, without the understanding of our tariqah. Because eventually our goal is to recognize the Imam and understand him as we should have. Then we come to the third level, the animal soul, Ruhe Hewani. Ruhe Hewani is the improved soul from the mineral and vegetative. You know why? Because there is a movement and there is a speech in the animal soul. रूहे हैवानी एक दर्जा ऊपर है मट्टी की और दरख्त यानी कि नबाताती रूह से ऊपर है, क्योंकि उसके अंदर हिलना चलना भी है, चलना भी है और बोलना भी है, क्योंकि उसके पास साउंड है. So it's better than the mineral and vegetative soul. And then if we are standing at that level where we do speak but do not make any sense, like animal barks, animal makes sound without any understanding, without any speech, without any language, then that is also okay. But you are better than other two. Animal can be a loyal animal to the human, like a dog. Can be a good loyal animal like a horse. Can be a helpful animal like a donkey or a cow.
can be a merciful animal like the milking cow or the goat. You see, animal has the additional attribution. And then if we are at that level, if we are loyal, if we are faithful, if we are helpful, then it is better than the mineral soul and vegetative soul. But you know what would be nice? If we will move on to the human soul. Wouldn't it be? क्या ये बेहतर नहीं होता कि हम मट्टी से भी गुजर कर, वेजिटेटिव से भी गुजर कर, एनिमल से भी गुजर कर इंसान बन जाते हैं? क्योंकि इंसान के पास रैशनल सोल होती है. Rational soul is not with animal, nor with vegetative, nor with a mineral. Human is the one who can rationalize, who can tell you what is hakikat and what is marifat. With the human soul, हम कह सकेंगे कि हकीकत क्या है, मारिफत क्या है, इल्म क्या है, तावील क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है. हमको कहाँ रहना है? Free will remain with us. No one can tell you otherwise. सोचना हमको है, हमको कहां पर बैठना है, हमको कहां पर खड़े रहना है, हमको कहां पर जाना है, हमको आगे बढ़ना है कि बैठ जाना है. That is your individual choice. Each one of us have that free will to do so. लेकिन human are the human of intellect, and human are the one with the rational soul. इंसान ही है जो अक्ल और मजहब को समझने की ताकत रखता है. और जो मजहब को समझने की ताकत रखता है वो तो हकीकत पर चलता है और वो तो मारिफत की तरफ जाता है. The one who has the rational soul and the intellect will understand the truth and will follow the hakikat and will seek the marifat. I hope I have made my point here. This is not going to take but a minute. ये हम इंसान की मिसाल पर है. The शरीयत, तरीकत, हकीकत and marifat, the mineral soul, vegetative soul, animal soul, and the human soul are in the example of the human. Shariat, if you are on Shariat, you are saying, I am nothing but a toddler. अगर आप शरीयत पर हैं तो आप खुद ही कहते हैं मैं तो एक छोटा बच्चा हूं. अगर आप तरीकत पर हैं तो आप कहते हैं मैं एडोलेसेंट हूं, मैं नो उम्र इंसान हूं. अगर आप हकीकत पर हैं तो आप कहते हैं कि मैं अब नौजवान, आई एम ए यंग मैन. और अगर आप मारिफत पर पहुंचते हैं तो आप कहते हैं कि मैं बालिग और समझदार, वाइज एडल्ट हूं. आप अपने आप को क्या कहते हैं वो आपके हाथ में है. I cannot tell you, no one can tell you. Where would you like to be? Would you like to act like a toddler? Or would you like to act like adolescent? Or would you like to act like a youngster? Or would you like to act like an adult, a wise person? कहां पर आप रहना चाहते हैं वो आपके ऊपर छोड़ा गया है. अगर आप इस लेसन को समझेंगे तो इंशाल्लाह इमाम की जो ख्वाहिश है हमारे लिए, that I wish my Jamaat will recognize me, you will be able to fulfill that wish of the Imam and you will make the Imam happy. You will make the Imam happy. If you want to make the Imam happy, then you must ask yourself a question.
You must reflect on yourself, on your understanding, on your beliefs, but self-reflection. No criticism. No one can tell you what to think. Don't let anyone tell you what to think. If you would like and you'd like to stay on the level of Shariat, then so be it. If you wanted to stay on the Tariqat, then so be it. If you believe you are in the Hakikat, then so be it. And then if you like to move forward into the Marifat, then so be it. Free will is yours, and no one can change that. No one can tell you where to stand and where to go. The last point for the day before we stop. Our tariqah is very, very precious. Our tariqah is very, very unique. What makes our tariqah precious and what makes our tariqah unique? Let me tell you. Imam and a living Imam and the recognition of Imam. Only one single tariqah in the world, in the universe, can say that we have Ale Nabi, Aulade Ali, a living and the present Imam. No one else can say that. That makes our tariqah a precious, unique tariqah. And our tariqah is extremely unique and precious tariqah. Just like stone, no value. Precious stone, very valuable. Tariqah, yeah, everyone has their own tariqah. Precious tariqah. Imam makes our tariqah a precious, unique tariqah. And no one can change that. If one do not see and have the value of our tariqah, then they may be looking at a diamond without understanding what diamond is. They may be looking at a red stone, ruby, but they will not know the value of that ruby. They may think it's just like a red stone. If they are looking at a pearl, but if they have no value of their pearl, they probably say it's just a white stone and no value in it. Look at the bottom line of this. The precious and unique stone in our tariqah is the nur of intellect, knowledge that makes us unique and precious. Wisdom that makes us unique and precious. And the spirit and spirituality. हमारी रूह और रूहानियत. क्या चीज हमको वैल्यूबल, प्रेशियस, यकता, यूनिक बनाती है? इमाम का नूर, नूर इल्म व अक्ल. इमाम का इल्म, इमाम की विजडम, हिकमत, और हमारी रूह जो इमाम से आई है, और रूहानियत जहां पर हमको जाना है, वो हमको प्रेशियस, यूनिक बनाती है. Don't forget, you are that precious stone amongst all of the stone. You are the precious murid of the Imam amongst
all humanity. But if you do not value yourself and you say, well, I'm just a human amongst 8 billion human, I'm just another stone. No, you are a precious stone because the Noor is shining on you. The Noor of the intellect, Noor of the Imam, the ilm of the Imam, the wisdom of the Imam, the soul of the Imam, and the Ruhaniyat is shining on you. And that makes you a precious stone amongst all of the stone, among all of the human. If you wish to have it, if you like to have it. If you don't want it, no one can tell you otherwise. अगर आप अपने आप को मट्टी और पत्थर की तरह रखना चाहते हो तो ये आपकी free will है. If you see yourself no better than any other human, then so be it. And I'm not saying this with a pride. No, we are all human, we are all brother and sister. But realize what you have in your tariqah. Realize the nur in the form of the Imam. Realize Imam's precious Khanavadan blessing on your soul. And that makes your soul the red ruby, the diamond, the pearl, the precious and unique stone. If you wish to accept and take. Because a stone that refuses the nur cannot become precious stone. In the mountains, there are a lot of stone. Only stones become precious stone, the one that accept the soul of the stone, precious stone. बहुत सारे इंसान हैं और बहुत सारे इस्माइली भी हैं, लेकिन वो इस्माइली, वो इंसान जो इमाम के रूल को एक्सेप्ट करता है, उसके इल्म को एक्सेप्ट करता है, उसकी हिदायत को एक्सेप्ट करता है, उसकी विजडम को एक्सेप्ट करता है, खाली वही प्रेशियस स्टोन बनते हैं. जो ब्लॉक कर देता है वो नहीं. I would like to stop and I would like to give you a preview of our next session. On the day 5, inshallah, this will be our lesson, a continued lesson moving forward. The subject name would be Imam Shanasi with the question, how is it possible and where do we find it? Where do we find recognition of Imam? How do we understand Imam? Do we find it in Farman, in Ginan, in the Quran, or in the books of Hudud-e-Din? I will leave you with this question. So let's stop here. So we may have few minutes for the question or comments. Ji. Subhanallah, sir, Subhanallah. Friends, please share your questions in the chat. So there are no questions in the chat at this time. Friends, please unmute your device if you have any questions. Ya Ali Madad. Aziz Ba, I want to know the difference between Noor-e Ilahi and Ali Allah. Very good. When we say Noor-e Ilahi, we are saying there is an Imam and there's a Noor-e Ilahi in him. But still, two different understanding. Imam and Noor-e Ilahi in Imam. When we say Ali Allah, we are saying they are both one and there is no difference in them. Ji. Ya Ali Madad, ALWAAZ sahib. Ya Ali Madad.
Shukr Maulay. Today we understand a lot, and thank you so much. I just had a few poetry, if in your permission, if I say. Yes, only with 1 minute. Thank you. Okay. Yeah, because what you said today, mashallah, and we have all our Dai and great Sufi who said the same thing about this Subhanallah. James. And Subhanallah. the first was Hakim Danishmand Buzurg Nasir Khisraw. که وقتی نور امام زمان به جانم بتافت لیل السرا بودم و شمس و دوها شدم به زیر مرکب خاتمی کیمیا شدم. Subhanallah. And Rumi said گریه بودم خنده شدم مرده بودم زنده شدم دولت عشق آمد و دولت پاینده شدم. And Hakim Nizami Ganjawi is another great Danishmand awliya. He said ای شرف نام نظامی تو خواجگی حوست غلامی تو مژده وصل تو که از سر جان برخیزم من طایر قدسم از دام جهان برخیزم به ولایت اگر بنده خویشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. Thank you so much. Subhanallah. 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 So, Pir Nasir Khusro said, I was nothing but like a dark night, a dark stone in the wilderness, until the Noor-e-Imam shined on my soul, and I found myself to be the highlight, the full lighted like a sun on my soul. मैं कुछ भी नहीं था मगर अंधेरी रात की तरह, लेकिन जब इमाम का नूर मेरी जात पर पड़ा तो मैं रोए रोशन सूरज की तरह हो गया. And Rumi said, I was nothing but like a dust, like a rock. I was not even living being. But then I became alive, step by step by step. Subhanallah, Subhanallah. Thank you so much. Appreciate that. Any other comments or question? Yani Madad, Aziz bhai. Yali Madad. When you say that, you are, whatever level you are at, आप अपनी जगह दुरुस्त है, तो अब हम अपने आप को जब इस्माइली कहलाते हैं और हम जमात खाने में जाके दुआ पढ़ते हैं और वकुलु शहीन असैना हमारे पाठ में है उफी इमाम मुबीन, तो वो जब हम शरीयत के लेवल पे है तो अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम इस्माइली है, क्योंकि हम ये मानते नहीं है कि वकुल शहीन सैन इमाम मुबीन, अगर जो हम शरीयत लेवल पे है तो हम कैसे अपने आप को इस्माइली कहला सकते हैं? To answer that question, Azim, I will quote Mullah Baba's Farman, so I do not have to say too much. There are amongst you many who have enrolled themselves as Ismaili. They are only Ismaili in the name, not by their call and action. I think I said it too much already. Yeah, that's exactly what I was aiming at. Yes, you have said it. Exactly. So I think we should all get the message from that format. Inshallah. Yeah. Thank you so much. Yali Madad. Imam's Farman are so clear for those who would like to accept, take it, and then follow it. So easy Farman. But it's not convenient for some. कुछ लोगों के लिए convenient नहीं है, वरना फरमान तो उधर ही है. लेकिन because it's not convenient, and we like to fit in, and because of that fit in, we have lost a huge deal. Exactly. Ali Allah Madad.
Let's make one last comment or question if you have one, and then we will stop. Any other comments? Any other question? Okay. With that, let's stop here. Inshallah, we will continue on our journey of the ilm, and may Mullah help us, bless us, and help us with his nur, so we may see and learn, inshallah. Thank you, everyone. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Thank you, Mashur. Yali Yali Madad. Madad, and thank you. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Yali Madad, Ya Ali sir. Madad, Ya Ali Yali Madad, Madad, Ya Ali sir. Madad.